दोस्तों, आप सबको देख के बड़ी हैरत हो रही होगी, हैरानी हो रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। मयूर इस वक्त बॉम्बे में, मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ और इस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के सामने हूँ, यानी बॉम्बे के इस बांद्रा एरिया में। और आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं एक बड़े ज़बरदस्त स्टार से, वो स्टार जो वाकई इस वक्त नंबर 1 है, और इनका नाम है सलमान खान। दिस इज वेयर एग्जैक्टली सलमान खान लिव्स इन बॉम्बे। और मजे की बात तो यह है कि सलमान खान जितने लवेबल स्टार हैं उतने कंट्रोवर्शियल भी। इस वक्त सलमान के बारे में बड़ी खबरें फैली हुई हैं कि ही इज ड्रिंकिंग अ लॉट, ही इज नॉट गोइंग टू शूटिंग। उसके सारे प्रोड्यूसर्स फिक्र मंद हैं, सलमान खान को प्यार हो गया है और वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड लॉट्स मोर। वेल, I'm right now, as I said, here outside Salman's house, and I'll be going to Salman's apartment, meet him, and find out what exactly is the truth, and many more facts about Salman Khan, which I'm sure you're not aware. It's going to be a very exclusive, very, very exclusive meeting. So are you ready for it? Let's go. Let's take you first of all to his apartment. Come on, follow me. Well, that's the blue door. As you can see, that's the apartment where he lives. बड़ा ब्लू सूदिंग सा कलर है, बड़ा आर्टिस्टिक सा हैंडल। आई एम श्योर अंदर का जो नज़ारा होगा वो भी बड़ा आर्टिस्टिक होगा, क्योंकि सलमान के टेस्ट का तो यहीं से पता चल रहा है। सो लेट्स रिंग द बेल। हाँ जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सलमान है? ओके, कम चलो। As you can see, right now I'm sitting at Salman's house, और वाकई ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि he's got a lovely apartment। कहते हैं ना, एक प्रॉपर बैचलर्स den, उस तरह की जगह। बड़ी ज़बरदस्त नई नई अनोखी चीज़ें यहाँ पे, ब्यूटीफुल चेयर्स, लवली क्लॉक्स, एक एक पीस, शो पीस, पेंटिंग्स, इट्स वेरी वेल डन। And also we see here something which I'm sure must be very important to all his girls fans, और वो है सलमान का मोबाइल फ़ोन। This is the mobile he uses, and I'm sure all the girls watching this program right now must be saying, please, please, please मयू, ये नंबर हमें दे दो। Well, I'm sure you understand कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑन एयर बिल्कुल नहीं दी जा सकती। मेरा मतलब है सलमान का नंबर। और ये जनाब इस आरामगाह की आराम कुर्सी है, यानी कि जिस पे कभी कभी वक्त मिलने के ऊपर सलमान इस तरह रिलैक्स होकर शायद अपनी पीठ सीधी करते हैं। आप सब तो जानते हैं कि सलमान ही एक ऐसे अकेले एक्टर हैं जिनकी फेम जितनी इंटरनेशनल है उतनी यहाँ भी। यानी उनके दीवाने, चाहे आप यूएस कहिए, सिंगापुर कहिए, यूनाइटेड किंगडम कहिए, या फिर इंडिया कहिए, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ सलमान का क्रेज ना हो। वाकई सलमान ना सिर्फ एक बड़े ज़बरदस्त स्टार हैं, बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, पर एट द सेम टाइम आई वुड से, नोइंग हिम फ्रॉम सो मेनी ईयर्स एज अ फ्रेंड, ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मेरे ख्याल से सलमान की और मेरी दोस्ती को बहुत साल हो गए, बचपन की बात है, लेकिन आई हैव येट टू सी अ पर्सन एज डाउन टू अर्थ एज ही इज़ अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग, और बहुत नेक दिल है, बहुत अच्छा है। और इतनी सक्सेस देखने के बाद भी जो लोग उसे बहुत करीबी से जानते हैं वो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सलमान के नेचर में, उसके एटीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आया। ही स्टिल वेरी मच वेरी ऑर्डिनरी पर्सन एट हार्ट। Well, this is the dining table.
rather I would call it breakfast table, जहाँ पे सलमान सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं. लंच और डिनर का जिक्र मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ही इज सो बिजी कि शायद उनको वक्त ही नहीं मिलता होगा कि लंच और डिनर किया जाए. थैंक यू. आपका नाम? Jafar. Jafar bhai. Well, he's the gentleman who serves Salman the breakfast, lunch, and takes care while he's here. You must be wondering, what time does Salman gets up? Well, it really depends. It varies from what time he's shooting and of course how late night he had. यानी previous रात वो कितने बजे सोए हैं. जैसे कि इस वक्त I've been here pretty early, but I believe he had a very late night. He came 4 o'clock, and before that he was very busy shooting. So I'm just waiting here, and he'll be joining me very soon. It's very difficult for me to analyze myself, brother, because it's very difficult for anybody to analyze themselves, because today you're a person today, and tomorrow you're not the same person. You know, you're growing. Like today I've met you, you may say something really nice to me, or you might change my point of view on something. Okay, so that part of me is not there anymore. You know, I will start following a little bit, you know, of you, and a little bit of that other person, a little bit of the other person. You know. So every time a person is growing, today I feel like right now I'm this introvert, shy kind of guy. In the afternoon I may not be that with my friends. That's you right. know, it's different. You can't, you know, you have 100 shades to your personality. Right. Now how are you going to define all those 100 shades? And most of the shades may, you know, contradict each other. ठीक बात है. So there's no definition, or you cannot explain yourself, or you cannot. So with every phase, every new thing, there are new things adding to your personality, Every your minute, thoughts. every single second, there's something coming in, into you, into me, into everybody. Right. And if it's not, then it's really sad because you're not growing. You know, you have to grow. And people say that, you know, he said this and then he contradicted himself. You know, contradiction also is growing. He may contradict himself again, but that means he's changing his mind, he's evolving something that was wrong. Okay, he's contradicting himself, and now he feels that this is right. So, you know, he's just growing. Right. Okay. That's the way I feel. It's a very interesting thing, Salman. I'll share it with you. When I first met you, Purani, going back years. So your personality came to me as a young teenager, an arrogant teenager. ठीक है? आगे मेरी पूरी बात सुन ले. Arrogant teenager. उसके बाद धीरे धीरे और मुलाकातें हुई, दोस्ती हुई. फिर मुझे लगा कि नहीं, सलमान को समझने के लिए एक मुलाकात या एक नज़र काफ़ी नहीं है. One needs time. And I started giving myself time. और मुलाकातें हुई. Then also I started trying to understand you, the Salman on screen, at the same time parallel off screen, क्योंकि हमारी मुलाकातें दोनों तरफ चल रही थी. And I discovered कि a brilliant actor, एक ऐसा एक्टर जिसने वाकई कुछ फिल्मों से प्रूव कर दिया कि वो बड़ा डेप्थ वाला एक्टर है. ही इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ दोज कि करके चला गया. उसकी डेप्थ उसकी कुछ फिल्मों में पूरी तरह नज़र आती है. और एज अ पर्सन में भी जो मैंने तेरी ह्यूमन साइड जो देखी है, आई एम ऑनेस्टली ऑन कैमरा से कि मैं तेरा नेचर, पर्सनैलिटी एंड परफॉर्मेंस का फ़ैन हो गया. इन especially last few years, we have been meeting regularly, I've been watching you regularly, and the other side which I'm getting to see, I've never seen a person like that in the industry. So ये चीज़ें सिर्फ कुछ लोगों तक ही क्यों है? Why it's not known? The soft side of you, the more human side of you, and there's so many things you do for good causes, which I'm sure you will not be happy if I mention on camera. So ये चीज़ ज़्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुँचती है? I like to keep it that way. I like to keep it that way. I mean, especially getting close to people. I don't like getting that close to anybody. Unless that person has grown up with me, unless that person is a very good friend of mine, unless that person is a part of my family, or close to somebody from my family. I would stay away. And the image about me being arrogant and that I have an attitude and stuff, that has come out through the press. Because the press, I don't talk to the press, yeah, and because I don't talk to the press, so I'm like totally unapproachable to them, and then they give their side, their point of view, okay, of me to my fans. Isn't this a way of getting back at you? It's not, it's not a genuine opinion then, let them, when they meet me sometimes, when my fans meet me, it takes me like 5 minutes to clear that out, one. And if I am like somewhere, you know, somewhere else at that point of time, you know, if I'm like
thinking about something else, and if I'm like, not rude, but if I'm like slightly indifferent, because we all have a problems, you know, Right. then they will believe that, yeah, those people were right. But then the next time I meet them, it'll be, you know, we'll change that around anyway. That's cool. Because I know that we are here because of the people who watch our movies and stuff. So there's no way that someone would deliberately want to be rude to a fan or anything. Right. So, nah, that's it. I mean,